हेलो दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में हम जिस टॉपिक की एमसीक्यू देखने वाले हैं वो टॉपिक है इवेंट एंड स्विंग प्रोग्रामिंग। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 25 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो 6 लेक्चर है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। और ये जो 25 प्लस एमसीक्यू है हम विद द एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इवेंट इन अ डेलीगेशन इवेंट मॉडल यूज्ड बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके ऑप्शन ए एन इवेंट इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब अ स्टेट चेंज इन अ सोर्स। ऑप्शन बी एन इवेंट इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब द स्टेट चेंज इन अ प्रोसेसिंग। Option C, an event is an object that describes any change by the user and the system. And option D, an event is a class used for defining object to create events. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, an event is an object that describes a state change in the source. Next question है, which of these package contain all the classes and methods required for event handling in Java? तो इसके ऑप्शन ए java.applet, ऑप्शन बी java.awt, ऑप्शन सी java.event एंड ऑप्शन डी java.awt.event। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी java.awt.event. These package contain all the classes and methods required for event handling in a Java. Next question है, which of these event will be generated if we close an applets window? तो इसके ऑप्शन ए एक्शन इवेंट, ऑप्शन बी कंपोनेंट इवेंट, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट इवेंट एंड ऑप्शन डी विंडोज इवेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विंडोज इवेंट। विंडोज इवेंट will be generated if we close an applet window. Next question है, which of these methods are used to register a keyboard event listener? तो इसके ऑप्शन ए की लिसनर, ऑप्शन बी एड किसनर, ऑप्शन सी एड की लिसनर एंड ऑप्शन डी इवेंट की बोर्ड लिसनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एड की लिसनर। These methods are used to register keyboard event listener. Next question है, event class is defined in which of these library? इसके ऑप्शन ए java.io, ऑप्शन बी java.lang, ऑप्शन सी java.net एंड ऑप्शन डी java.util। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी java.util. All event classes is defined in java.util library. Next question है, which of these event will be notified if scroll bar is manipulated? तो इसके ऑप्शन ए एक्शन इवेंट, ऑप्शन बी कंपोनेंट इवेंट, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट इवेंट एंड ऑप्शन डी विंडो इवेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एडजस्टमेंट इवेंट। एडजस्टमेंट इवेंट will be notified if an scroll bar is manipulated. Next question है, which of these class is a superclass of all the events? तो इसके ऑप्शन ए इवेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इवेंट क्लास, ऑप्शन सी एक्शन इवेंट एंड ऑप्शन डी आइटम इवेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास इज a super class of all events. Next question है, which of these method can be used to determine the type of event? तो इसके ऑप्शन ए गेट आईडी, ऑप्शन बी गेट सोर्स, ऑप्शन सी गेट इवेंट एंड ऑप्शन डी गेट इवेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गेट आईडी। गेट आईडी मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इवेंट। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these package is used for all the text related modifications? तो इसके ऑप्शन ए java.text, ऑप्शन बी java.awt, ऑप्शन सी java.lang.text, ऑप्शन डी java.text.mofify। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए java.text। java.text
package is used for all text related modifications? Next question है, what is a listener in a context to event handling? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, a listener is a variable that is notified when an event occurs. Option B, a listener is an object that is notified when an event occurs. Option C, an listener is an method that is notified when an event occurs. And option D, none of the mention. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, a listener is an object that is notified when an event occurs. Next question है, which of these event is generated when a button is pressed? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्शन इवेंट, ऑप्शन बी की इवेंट, ऑप्शन सी विंडो इवेंट एंड ऑप्शन डी एडजस्टमेंट इवेंट. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्शन इवेंट. Action event is generated when button is pressed. Next question है, which of these method can be used to obtain the command name for invoking action event object? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए get command, ऑप्शन बी get action command, ऑप्शन सी get action event एंड ऑप्शन डी get action event command. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी get action command. Get action command method can be used to obtain the command name for invoking the action event object. Next question है, which of these method can be used to obtain the coordinates of a mouse? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए get point, ऑप्शन बी get coordinates, ऑप्शन सी get mouse xy एंड ऑप्शन डी get mouse coordinates. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए get point. Get point method is used to obtain the coordinate of a mouse. Next question है, which of these event is generated when the size of an event is changed? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए component event, ऑप्शन बी container event, ऑप्शन सी focus event एंड ऑप्शन डी input event. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए component event. Component event is generated when the size of the event is changed. Next question है, which of these event is generated when the component is added or removed? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए component event, ऑप्शन बी container event, ऑप्शन सी focus event एंड ऑप्शन डी input event. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी container event. Container event is generated when the component is added or removed. Next question है, which of these is a superclass of the container event class? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंडोज इवेंट, ऑप्शन बी कंपोनेंट इवेंट, ऑप्शन सी आइटम इवेंट एंड ऑप्शन डी इनपुट इवेंट. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंपोनेंट इवेंट. कंपोनेंट इवेंट इज द सुपर क्लास ऑफ कंटेनर इवेंट class. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. Next question है, which of these are the integer constant of the component event class? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए component hidden, ऑप्शन बी component moved, ऑप्शन सी component resize एंड ऑप्शन डी all of the mention. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the mention. All these are the integer constant of the component event class. Next question है, which of these event is generated when the window is closed? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेक्स्ट इवेंट, ऑप्शन बी माउस इवेंट, ऑप्शन सी फोकस इवेंट एंड ऑप्शन डी विंडो इवेंट. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विंडो इवेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है विंडो क्लोज हो रही है तो इवेंट कौन सा आएगा? विंडो इवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these method will be invoked if the character is entered? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए keyPressed, ऑप्शन बी keyReleased, ऑप्शन सी keyTyped एंड ऑप्शन डी keyEntered. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी keyTyped. Keytyped method will be invoked if a character is entered. Next question है, which is used to store data and partial result as well as platform dynamic linking return value for the method and dispatch exception. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी पैनल, ऑप्शन सी फ्रेम एंड ऑप्शन डी कंटेनर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which is the container that doesn't contain title bar and menu bar, but it can have other components like button, text field, etc. इसके ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी पैनल एंड ऑप्शन डी कंटेनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which method can set or change the text in a label। तो इसके ऑप्शन ए set text, ऑप्शन बी get text, ऑप्शन सी all of the above एंड ऑप्शन डी none of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए set text। set text method can set or change the text in a label। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which place can put the event handling code। इसके ऑप्शन ए सेम क्लास, ऑप्शन बी अदर क्लास, ऑप्शन सी एनोनिमस क्लास एंड ऑप्शन डी ऑल मेंशन अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल मेंशन अबव। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द एक्शन लिसनर इंटरफेस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एक्शन इवेंट, फॉर एग्जांपल इट यूज्ड बाय अ। तो इसके ऑप्शन ए जे बटन, ऑप्शन बी जे चेकबॉक्स, ऑप्शन सी जे मेनू आइटम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.